Good evening, everyone. How are you all doing? I hope you can see me and hear me clearly. If you can see me and hear me clearly, please type good evening in the chat box so that we know you can see and hear me clearly. So today we are going to talk about a very interesting topic, that is Ramadan and type 1 diabetes. I hope I'm pronouncing it correct. If not, then there are, I think, a lot of people to correct me anyways. So today before the call, I had a very beautiful conversation with one Islamic scholar, and she shared so many inputs on the uh, conventional thoughts we have, that we tend to do the entire practice of Ramadan wrong, Rosa, opening Rosa and everything. And she shared it beautifully. She will be joining us shortly. But before that, we have Dr. Ovis. Dr. Ovis, can you please introduce yourself? Yes. Hi, everyone. Assalamu alaikum. My name is Dr. Wais Pirzada, and I'm talking right now from Srinagar, Kashmir. And I deal with diabetes and endocrinology. And my area of interest is type 1 diabetes. I've done a lot of work with type 1 diabetes. And I must, congratulate Mehak for, organizing this type of webinars. Like it was not happening. When I joined endocrinology in 2015, there was nothing like anything about type 1 diabetes. Actually, it's not aware to me. Now that we are constantly, talking about very important topics. Last month, we had a topic about sexual health and type 1 diabetes. And now, since the holy month of Ramadan is coming, and this is very important, many of our, people who are affected with type 1 diabetes want to fast. So it is a great, opportunity for them to learn, and also for us to discuss. So we will try to make it more people friendly, not to use a lot of medical terminology, like so it is a learning for each and every one of us. So Thank you. looking forward to have a good discussion in next 1 hour. Thank you, Dr. Ovis. Now we have Dr. Tahir, who is also a type 1 himself. Dr. Tahir, please introduce yourself. Yeah, so regarding the relation with diabetes is as myself, but my area of interest is totally different. That is, as a critical care physician, I'm working here in Kolkata. So, came across a lot of people like Mehek, Dr. Oves in different conferences where I joined as a patient, not as a treating physician. But in the meantime, when I learned a lot of things, and it's like I keep on learning in all this platform. I am here also. I'll share my view as well as I'll here to learn. So more the things I would love to learn a little bit more in coming few minutes, hours. Yeah. Thank you, Dr. Tahir. Dr. Ovis, I think before we start today, one thing that is very important is Ramadan, when you do fasting, you don't see whether you are type 1 diabetes or type 2 diabetes. So fasting for a diabetic in itself is the first question. So before we start that, I want you to explain them the difference between type 1 and type 2, and then we'll come for fasting and for diabetics. All right, so before I talk about type 1 and type 2 diabetes, let's talk about what Ramadan is. So Ramadan is the one of the 5 principles of Islam. So it is the 9th calendar month of the lunar calendar. So it comes every year 10 to 11 days earlier. And so those adults, like those who have crossed puberty, it is an obligation for them to observe the Ramadan fast. So this fast abstains a person from eating or drinking anything starting from dawn to dusk. So it is type 1 diabetes, which itself is a challenge, and fasting with type 1 diabetes is a bigger challenge. So coming to your question, what is the difference between type 1 and type 2 diabetes? I see both types of diabetes in my routine clinical practice. So when we talk about diabetes, many people, whenever we are giving any talk of diabetes, most of those talks are actually about type 2 diabetes. So not many of us talk about type 1 diabetes. So when somebody is giving a talk, we should presume it is type 2 diabetes unless he's specifying it. So now what happens in type 1 diabetes? So type 1 diabetes is an autoimmune disease.
And what happens here is that the body's own insulin making cells are destroyed by this autoimmune process, which results in absolute deficiency of insulin. So the major difference is in type 1 diabetes, there is absolutely no insulin, and the treatment is giving insulin. There is no other drug as of now. We can use some oral drugs, but the treatment of type 1 diabetes is insulin, and that too many times a day, multiple injections. When it comes to type 2 diabetes, so type 2 diabetes is usually because of insulin resistance. So these patients may be obese, they may have a family history, and the main pathology or the defect is the body is making insulin, but the body is not able to utilize it nicely or adequately. So type 2 diabetes you can manage with lifestyle alone. You can manage type 2 diabetes with medications. Those medications can either be oral drugs or insulin or combination of all. So one point, type 1 diabetes, there is no insulin. It happens because of deficiency of insulin. So a person has to take insulin. Whereas in type 2 diabetes, it happens due to insulin resistance. We can even manage it with lifestyle modifications. Yeah. Thank you, Dr. Ovis. Okay, you shared it very nicely, both the differences. Now I'll ask next question to Dr. Tahir. Dr. Tahir, do you do the fastings? I occasionally I did. Occasionally. Okay. Yeah. So next question is regarding the fasting only. So why is fasting during Ramadan particularly called challenging for individual with type 1 diabetes? Though I know Ramadan is challenging for an individual itself, but when it comes to type 1 diabetes, why it is called as more challenging? Yeah, so regarding type 1 diabetes, it is more challenge like in long time. I mean, in winter time, minimum 10 hours to 13, 14 hours. They have to abstain from the food and the drink from, I mean, since early morning to late evening. So in this kind of things, it disrupt the regular intake of the food and medication, and which is contradict to our type 1D life. In our type 1D life, what we have to do, we have to calculate the food, timing, insulin, everything. The entire thing disrupts. So that's why it's like challenging for the individual with type 1 diabetes. Right, definitely. Also, the hypos that happen because of no Yeah. food and water intake. So, totally agree. Okay. Uh, One thing that I want to ask is, Dr. Ovis, is fasting good for people with type 1 diabetes, or does it impact blood sugar, or we should totally avoid fasting? So if you would have asked this question to me some 10 years back, like when I started my practice in endocrinology, people who would often ask us, type 1s that I'm talking about, that whether they can fast, our answer used to be strictly no. It's an absolute contraindication. But over the period of time, now latest studies, now we have limited number of studies, but whatever data that we have, a lot of research that has been done. Now, recently, like I was attending, in 2022, I attended ISPAD conference in Abu Dhabi. There I met Dr. Hasnan. He's an authority on type 1 diabetes and Ramadan. So they have changed the risk stratification score. So earlier, the type 1 diabetes would fall in a very high risk group. So we used to absolutely say, no, you are a type 1 diabetic and then you should not fast. But having been said this, type 1 diabetes is still a high risk group. But we need to do the appropriate risk stratification that we will discuss later. So a type 1 diabetic, if he intends to fast, our job as an healthcare provider, as their doctors, is to guide them. We cannot say no to anyone who intends to fast. I know many people who were very high risk group, and we told them not to fast, but they actually fasted. And after the Eid, they came to us and said, Doctor, you said not to fast, but I was fasting. I observed these many days and nothing happened to me. And at the same time, those people who ask us whether they should fast or not, they don't have an intention of fasting. So it is actually, a personal choice. It's a religious obligation.
people anyways would fast, but we did not had appropriate, guidance or guidelines to, educate our type 1s. So I would say it is still a high risk group, which we will discuss later. And people with type 1 diabetes, of course, they can fast. This is my answer in 2024. Thank you, Dr. Ovis. And Dr. Tahir, would you like to shed light on some technology that can help us during the fasting period? Yeah, so regarding fasting, I put myself on CGM, I mean 2 years back. After that, I feel that it is quite a like it's quite a easier to take decision in the fasting, hyper managing everything. But before that, I mean when I start my journey 22 years back with 30/70 insulin, I tried at that time with fasting, I mean in Ramadan fasting also, but I had to break, and I mean over the decade I never tried to do fasting. Then when technology, I mean then I applied it myself, how it goes on with proper diet counseling and proper monitoring, preferably over the CGM, then it can be done nowadays. It's my simple question: which things which 2 decades back is absolutely no, which cannot be done, but it can be done with cautious, with proper diet management and with proper monitoring, preferably over the CGM. Very true. Even when I was diagnosed, I used to think that as a diabetic, you cannot do fasting. But now with CGM and all the technology, I feel fasting has become very easy. In fact, intermittent fasting is trending, and kind of Ramadan is somewhat similar to this. Ramadan is similar to this entire thing, just that we are fasting in the morning rather than in the night. So thank you so much for sharing that. Okay, Dr. Ovis. What medical advice should individuals with type 1 diabetes seek before deciding to fast during Ramadan? So before, the start of Ramadan, there should be a pre-Ramadan counseling or education. It starts usually before 4 to 6 weeks before the actual Ramadan starts. So what I do in my practice is that when a person comes to me, and majority of my patients are Muslims, so I ask them, what are your plans for this year? Like, I start with whether have you observed fast in the last Ramadan? How was it? And did you face any challenges? And are you planning? Because see, as I told you earlier, that we cannot order anyone that you should fast or you should not fast. We have to give our medical advice, and based on there should be an informed decision by the person who's taking the advice. So we have to first of all do a proper risk stratification. Now, risk stratification, there are three categories now. Earlier, there used to be a lot of categories. Now, there are three categories: low risk, moderate risk, and high risk. So type 1 diabetes, and in these risk categories, they have given a scoring. Like for type 1 diabetes, they have given a score of 1. For type 2 diabetes, they have given a score of 2. Then duration of diabetes. Like if it is more than 10 years, they have given a score of 1. If it is less than 10 years, you have given a score of 0. And then comes the glycemic control. If it is more than 9%, score 1, less than 9%, score 0. Then if you have a hypoglycemia unawareness, very important, they have straight away given a score of 6.5. Straight away, this person is a very high risk group. And then you have like recurrent hypoglycemias. So similarly, they have given a risk stratification score. From 0 to 3 is low risk. From 3.5 to 6 is a moderate risk. Somebody who has a score of 6.5 is a high risk group. So once we are done with the risk stratification, then we have to explain the person that you are in this risk group, and these are the problems that you might face, and these things we need to do. So the problems that we discuss is which is the major is an hypoglycemia. So hypoglycemia is the major risk factor which can alter your diabetes, and which is very dangerous. So we have to talk about the hypoglycemia, what it is, what are the symptoms that you may experience, and what you have to do. Similarly, the hyperglycemia, you may have symptoms of hyperglycemia. Third is dehydration.
And fourth is very serious condition like diabetic ketoacidosis. Again, if somebody had a diabetic ketoacidosis in last 3 months, is again a very high risk category. So then we talk about the what you need to do if you are experiencing any issues, like somebody who has a hypoglycemia. So we give them the education that if your blood sugar drops below 70, with or without symptoms, you should straight away break the fast. Or if you are experiencing hypoglycemic symptoms that we explain, though hypoglycemic symptoms that I want to elaborate here are like if you are feeling hungry. Feeling hungry is a very common symptom of low blood sugar. Feeling palpitations, your heart is beating fast, you are excessively sweating, your cognition is impaired. So these are the symptoms of hypoglycemia. There they should immediately break the fast. They should not wait till iftar time to break the fast. And or if they have a blood sugar which are exceeding 300s at any time, you should straight away break the fast. So starting with the risk stratification, then giving them the education that what are the things that they need to do. Third thing is that we have to adjust their medication. So most of these people are on insulin. So if they are, like Dr. Tahir said, he was on pre-mixed insulin. Pre-mixed insulin is an absolute no for a type 1. So I don't know any type 1 who is on a pre-mixed insulin. So pre-mixed insulin is a score. If somebody is using pre-mixed insulin, it gives a score of 2. So if somebody is using pre-mixed insulin, we usually tell them that they should take the evening dose to the sahur time and make it half if a person is on a twice daily pre-mixed insulin. Whereas if somebody is on MDI, multiple injections like basal bolus regime, so if the blood sugar is well controlled, like HbA1c is less than 7.5%, we reduce the basal dose to between 20 to 30%. And pre-parental dose, if a person knows how to do an insulin carb ratio, insulin sensitivity factor, if they are using it, then they can use it without doing any dose modification. Only thing is they don't have to give insulin at the lunchtime because they are not consuming the meal. Whereas if somebody is on a fixed dose, my people, they are in my population, most of them on the fixed dose insulin. So what you have to do is in fixed dose insulin, if you are having good control, then you give the same dose. But if there is a bad control, then you have to reduce the pre-parental dose by 20 to 30%. डॉक्टर एक बार ये जो आपने थोड़ा सा स्ट्रैटिफिकेशन समझाया, ये हिंदी में भी समझा देंगे? कुछ लोग हिंदी में चाहते हैं कि आप उनको बताएं। ओके, सो पहले लाइक 10 साल पहले जब हम टाइप 1 डायबिटीज और रमदान के बारे में जब भी बात करते थे, जो भी हमसे मशवरा लेता था, तो हम ये कहते थे कि टाइप 1 डायबिटीज एक हाई रिस्क कैटेगरी है, वेरी हाई रिस्क कैटेगरी रादर। तो इन लोगों को हम ये कहते थे कि आप फास्टिंग, इट इज़ बेटर नॉट टू फास्ट, आप फास्टिंग नहीं कर, आप रोज़ा नहीं रखिए। मगर अब जो 2021 में एक लेटेस्ट गाइडलाइंस आई, जो इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन IDF और दार डायबिटीज एंड रमदान इंटरनेशनल अलायंस ने एक कंसेंसस निकाला कि हम इतना स्ट्रिक्ट नहीं रह सकते हैं इन लोगों के साथ जिनको टाइप 1 डायबिटीज है। तो जो रिस्क जो है उन्होंने रखा, उन्होंने 3 कैटेगरीज इसकी बनाई। कैटेगरीज है हाई रिस्क ग्रुप, लाइक मॉडरेट रिस्क, हाई रिस्क एंड लो रिस्क। सो जो ये रिस्क है ये डिपेंड किया उन्होंने कुछ पैरामीटर्स पे, लाइक अगर किसी का टाइप 1 डायबिटीज है तो उन्होंने इसका जो स्कोरिंग, रिस्क स्कोरिंग है वो रखा 1। अगर किसी का टाइप 2 है तो स्कोरिंग 0 रखा। अगर किसी का ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज 10 साल या उससे ज्यादा है तो रिस्क स्कोर 1 रखा। अगर किसी का डायबिटीज 10 साल से कम है तो रिस्क स्कोर 0 बनेगा। सिमिलरली अगर किसी को प्रेजेंस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, लो शुगर है, जिसको हम कहते हैं, एक कैटेगरी है हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस। ये हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस क्या चीज़ है कि नॉर्मली जब किसी का लो ब्लड शुगर हो जाता है तो इन लोगों में सिम्टम्स आते हैं लो ब्लड शुगर के, जैसे भूख लगना, पसीना ज़्यादा आना, पैल्पिटेशंस होना, नर्वसनेस होना। तो हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस में लोगों को ब्लड शुगर लो हो जाता है बट विदाउट सिम्टम्स। तो ये एक बहुत ही हाई रिस्क कैटेगरी बन जाती है। इसका स्कोर इन्होंने रखा है 6.5। सो और भी कुछ पैरामीटर्स है, जैसे कि आप ट्रीटमेंट क्या ले रहे हैं, आप
मल्टीपल इंजेक्शंस ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से स्कोर बनता है। वो आपको अपने जो आपका एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है या डायबिटोलॉजिस्ट है जिससे आप मिल रहे हैं, वो आपको एक स्कोरिंग बना के देगा कि आप किस रिस्क स्कोर में फॉल करते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं ड्यूरिंग रमदान। थैंक यू डॉक्टर ओवेस, आपने बहुत अच्छे से उसको समझाया। नाउ वी हैव 2 more people. Once they are available, I'll add them also in the panel. Till then, we'll go to the next question to Dr. Tahir by the time the other 2 people are prepared. Dr. Tahir, are there Yeah. specific risk associated with fasting for people with type 1 diabetes? कोई भी particular तरह के risk हैं? Yeah, so like generally what I feel, three risk which I remind myself that one can be dehydration, number two hypoglycemic unawareness that can be, and number three diabetic ketoacidosis. So these are the most common or deadly things that can happen, and that's all. Yeah. Just a minute. Thank you, Dr. Tahir. Just a minute. I'm trying to add Asra here. Asra is also a type 1 diabetic. Asra, I think if you turn on the camera, then only the spotlight will be on. But if you can okay, you have turned on. Thank you, Asra. Asra is a type 1 diabetic and also a mother of a type 1 diabetic and a diabetes educator. Also, she stays in an Islamic country, so she will also have a lot of inputs to share. So, Asra, I'm sorry I'm disturbing you in between your lunch. Fine. The time differences make it all over the place. In fact, right now I'm not in Saudi. I live in Jeddah normally. In Jeddah, we are only an hour away from Makkah. So all the religious parameters get that much more concentrated. Right. But as far as Ramadan goes, I have fasted last year for 26 days. Asra, your voice is breaking. Asra, But I'm on I think if she can 780 put up the G camera pump, and talk which because makes the her network is algorithm poor. quite capable of. The doctor just mentioned outside. Yeah. yeah. Now I'm Yeah. actually in a very noisy place. Yeah, now, So what happens is when I fasted last year for 26 of the 30 days, I found the water content had to be really, really monitored. And the hours were between 6 in the evening till 5 in the morning. And I used to literally drink every hour. Every hour, I would make sure I'm getting my water. The other thing I had to take care of was the exercise. Just because we are fasting, we can't drop our exercise. We need that to keep our blood sugars in check. So even though we are fasting, the chances, doctors have spoken about hypoglycemia, but the chances of going hyper as just as bad because we are missing insulin. Without the food, we are not bolusing, especially those on MDI will not bolus. So these things we do need to take care of. I'm looking more at from the practical side and the lived experience, then definitely it does make a difference how you're monitoring, what sort of insulin delivery system you're taking, and how you're able to react as and when needed. We have to be very, very fluid, I broke my fast twice during the month because my blood sugars were trending towards the 50s. And as soon as they hit 60, I know. And religious wise, I know my parameters and I know it is okay. And another thing we need to remember is that we are allowed to take insulin while we are fasting. yes. So if you are going high, you can definitely take that insulin as much as you would need. And then that again makes it easier with the pump because you can take mini doses, very, very tiny doses. Right. Thank you. Thank you so much, Asra, for sharing your own experience as a type 1 diabetic. Asra is on 780G pump and she also keeps switching between IAPS if some users are here. So what she has been telling is कि पंप में फास्टिंग बहुत ज़्यादा और आसान हो जाता ही है क्योंकि पंप से सिर्फ ड्रॉप करके इंसुलिन जाता है। तो अगर आप नहीं भी खाते हैं तो भी आप मेंटेन कर पाते हैं।
सेकेंड चीज असरा ने बोली जो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि सिर्फ हाइपोग्लाइसीमिया नहीं, हाइपरग्लाइसीमिया का भी ध्यान रखना है। जैसे कि डॉक्टर ओविस और डॉक्टर ताहिर ने भी बोला कि डीकेए भी हो सकता है, कीटोन कि जब हम नहीं खाते ज्यादा देर तो स्टारवेशन कीटोन्स हो जाते हैं बॉडी में, ना खाने की वजह से भी बॉडी में कीटोन्स हो जाते हैं, जिसका भी हम लोगों को ध्यान रखना होता है। थैंक यू सो मच असरा फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड आई एम रियली सॉरी वी डिस्टर्ब यू इन बिटवीन योर लंच। Okay, now I think there is Misab. Are you here? Misab is also joining, who is an Islamic scholar. I'm not able to see her. Okay, by the time she joins in, let's move to the. Okay, Misab is here. Her audio is yet to be connected, and her. Okay, she is joining. Till she is joining, I will ask next question to Dr. Tahir. Okay, Dr. Tahir. How can Yeah. individuals with type 1 diabetes monitor their blood sugars effectively during fasting? Like how often should they check if they are not on CGM specifically? Yeah, so I mean, as per prescription, it is something, and on reality, it is something like that. Like every before, after meal, in between, if any, I mean, mid of the day, at the afternoon, it should be to maintain, I mean, proper blood sugar monitoring. But what I feel, most of the people, they don't do multiple checks. So simply what I have to suggest, do it before iftar, before sehri, after sehri, after iftar. Most high peak I have seen after iftar itself at around 9-10 p.m. Those, I mean, there is the most time, and then in the daytime at least twice. So the simple formula I have suggested to type 1 diabetic, and I'll force them, I mean, nowadays that what I am doing right now, to force them to put CGM for at least Ramadan month, because it is very difficult. Whatever I can tell point at certain point, it can be changes, and most of the time they are working either student or professional, so absolute rest is not possible. So that is my first prescription will be put CGM. If not, then at least 6 times a day. Thank you, Dr. Tahir. Very important it is to check at least 6 times a day. And one thing is, जब भी लगे शुगर लो हो रही है, अगर आपको जरा सा भी सिम्टम फील हो रहा है, प्लीज प्लीज क्रॉस चेक, बिकॉज आपने कुछ नहीं खाया है सुबह से, तो लो होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और या फिर बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड फील हो रहा है कि शुगर्स हाई होने लग रही हैं, उस टाइम भी चेक करें। अगर 300 से ऊपर है तो जैसे डॉक्टर ओबिस ने कहा कि आपको फास्ट ब्रेक करना है। अब मैं नेक्स्ट आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ मिसबा से। ये एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, और मैंने इनको स्पेशली इसलिए बुलाया क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं हमें अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को लेकर। और मिसबा ने मुझसे शेयर भी किया कुछ कि हम लोग ना बहुत लोगों की सुनते हैं। देर आर इस्लामिक स्कॉलर्स एंड देर आर रिलीजियस प्रैक्टिशनर्स। इस्लामिक स्कॉलर्स वो होते हैं जिनको पूरी नॉलेज होती है कि क्या चीजें सही हैं क्या गलत है। और अगर आप सिर्फ इमाम के पास चले जाएंगे तो इस इमाम सिर्फ एक इस्लामिक प्रीस्ट है, बट ही मे नॉट बी अ स्कॉलर हियर। तो इस्लामिक स्कॉलर्स का रोल ही ये होता है कि आपके मिसकंसेप्शंस को दूर करना। मिसबा, क्या आप थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगी? अगर आपको कैमरा ऑफ करना हो तो आप कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल फील करें। No, it's fine. Assalamu alaikum to everyone. Okay, so मेरा नाम मिसबा हक है and I am from राजस्थान जयपुर। मैंने अपनी पढ़ाई आलिमियत की यही मुकम्मल की है, और from one of the oldest female madrasa of आलिमियत। and so जो भी Muslims मुझे सुन रहे हैं, just know that everything, all the knowledge is coming from authentic source. So yes. या थैंक यू मिसबा। क्योंकि डॉक्टर्स ऑलरेडी हैं, मैं चाहती हूँ कि पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस मिसबा से क्लियर कर लें, ताकि मिसबा को हम यहाँ से फिर मिसबा अपना जांच पाएंगी, और हम लोग डॉक्टर से और ज़्यादा टेक्निकल बातें करेंगे, जहाँ पे इंसुलिन टाइमिंग्स की बातें करनी है, फूड की बात करनी है। सो मिसबा,
आपसे मैं कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ जो मुझे लगता है कि लोगों के मन में है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि क्या हम रमजान के टाइम, फास्टिंग के टाइम शुगर चेक कर सकते हैं? शुगर चेक करने से हमारा फास्ट तो नहीं टूट जाता? ओके, शुगर चेक करने से फास्ट नहीं टूटता। फास्ट टूटने के लिए हमें ये जानना चाहिए कि फास्ट टूटता कैसे है। अगर आप कोई चीज मुंह से अंदर ले रहे हैं या नाक से अंदर ले रहे हैं या आपकी जो बॉडी की नेचुरल ओपनिंग्स है वहां से अंदर ले रहे हैं तो फास्ट टूटेगा। बट अगर आप कोई चीज अपने स्किन पे लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल ड्रिप लगा रहे हैं या इंजेक्शन लगा रहे हैं या फिर शुगर चेक करने के लिए आप उसको पिन से लगाते हैं ब्लड निकालने के लिए, तो वो टोटली फाइन है, उससे फास्ट नहीं टूटता है। ये एक मिसकंसेप्शन है कि फास्ट टूट जाता है। आपका फास्ट रहेगा और आपको उसकी कज़ा नहीं करनी पड़ेगी। थैंक यू मिसबा। और नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है। डॉक्टर ओवेसी, यू वांटेड टू आस्क समथिंग? मेरा एक जस्ट एक क्वेरी है मिसबा जी से कि इन्होंने कहा कि ड्रिप लगाने से फास्ट नहीं ब्रेक होता है। ये किस जी टाइप का ड्रिप होना चाहिए? हमारे लोग हैं वो जानना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ड्रिप्स होते हैं जिनमें डीएनएस जैसे डेक्सट्रोस होता है, ताकत होता है, या मल्टीविटामिन्स का ड्रिप लगाते हैं, तो इस पे थोड़ी सी वजाहत कीजिए। किसी भी नहीं, किसी भी तरह के ड्रिप से रोजा नहीं टूटता है, चाहे वो ग्लूकोज हो या विटामिन का हो या फिर अगर इंसुलिन ले रहे हैं इंजेक्शन के थ्रू तो भी रोजा नहीं टूटेगा। अगर कोई चीज आप मुंह से खा रहे हैं, मेडिसिन मुंह से खा रहे हैं या नाक से आप ले रहे हैं कोई मेडिसिन या फिर प्राइवेट पार्ट के जरिए भी कुछ इमरजेंसी में मेडिसिन जाती हैं, सिर्फ उनसे रोजा ब्रेक होता है। और बाकी इंजेक्शन या फिर कोई कुछ भी इंजेक्ट करने से, आपकी स्किन पे इंजेक्ट करने से रोजा नहीं टूटेगा। थैंक यू मिसबा। असरा, यू आल्सो वांटेड टू आस्क समथिंग? जी मिसबा, as far as I know, अगर किसी को ब्लड शुगर्स हाई होने की वजह से कीटोएसिडोसिस शुरू हो रहा है तो दे कैन वॉमिट, दे कैन थ्रो अप, और अगर हैंडफुल से बढ़ के वॉमिट आता है तो रोजा टूट सकता है। एंड दैट ऑफ कोर्स, एज द डॉक्टर सेड, आपको करेक्शन भी लेना है, आपको कुछ खाना भी है, आपको यू हैव टू गो थ्रू द थिंग। सो when people throw up in a fast owing to high blood sugar, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि करेक्शन भी ले, एंड रोजा वैसे भी टूट गया है। एंड दिस हैज हैपेंड टू मी व्हेन आई यूज्ड टू बी ऑन एमडीआई। जिद के मारे हम रोजा रहते थे जब हमको जायज था कि नहीं रहना है। एंड जी बिल्कुल। जब ब्लड शुगर 350 के ऊपर होने लगते हैं तो कीटोएसिडोसिस में वेरी कॉमन टू थ्रो अप। राइट, राइट। सो मिस, देखिए, हाँ, ये असरा पूछ रही है कि अगर वॉमिट आ जाए तो फास्ट टूट जाता है? जी हाँ, वॉमिट से फास्ट टूट जाता है। अगर मुंह भर के वॉमिट आ रही है खुद ब खुद, उससे फास्ट टूट जाएगा। और इट्स ओके, अगर फास्ट टूट गया है तो आप बाद में उसकी कज़ा कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, अगर किसी की मुझे ये चीज भी क्लियर करनी है कि अगर किसी की ऐसी कोई बीमारी है जो उसको जिंदगी भर रहने वाली है और वो कभी खत्म नहीं होगी और वो इतनी ज्यादा सीवियर बीमारी है कि उससे इंसान की जान जाने का भी खतरा हो सकता है, तो इस कंडीशन में आपके लिए इस्लाम ने आसानी भी रखी है कि आप फिदिया दे सकते हैं। यानी आपको फास्ट करने की जरूरत नहीं है, आप उसकी जगह फिदिया दे सकते हैं। और क्योंकि आपकी वो बीमारी जिंदगी में कभी खत्म ही नहीं होगी, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज है आपने जैसे बताया, जिसमें इंसुलिन लेना जरूरी होता है। और कभी कभी इतनी ज्यादा कंडीशन खराब हो जाती है कि डेथ भी हो सकती है। तो अगर कोई बहुत ज्यादा ही खराब कंडीशन है तो उसमें आप फास्ट नहीं रखें, फिदिया दें। थैंक यू। मेरा एक सवाल है यहाँ पे मिसबा जी से, ये जी, फिदिया कैसे दे सकते हैं? इसका सही तरीका क्या है देने का? फिदिया बेसिकली होता है कि आप 2.25 किलो गेहूं, आटा जिसे हम कहते हैं, वो आप किसी भी गरीब को, मिस्कीन को दे सकते हैं। और हर एक रोजे के बदले आप एक दिन का फिदिया निकालेंगे। और तो ये बेसिकली फिदिया होता है। इसकी जगह आप पैसे भी इतने, जितना 2.25 किलो गेहूं आएगा उतना ही आप पैसे निकाल सकते हैं और पैसे उस गरीब को दे सकते हैं। तो इससे आपका बैलेंस हो जाएगा।
थैंक यू मिसबा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ मिसबा। किसी ने फास्ट रखा और उसको वॉमिट आ गई या उसकी शुगर्स लो चली गई और उसने बीच में फास्ट तोड़ दिया, ऐसे में वो जना क्या करेगा? क्योंकि लोगों को लगता है कि अब हमें सजा मिलेगी, तो उसके लिए क्या? नो नो नो, प्लीज आप, अगर आपकी तबीयत खराब हो रही है प्लीज आप फास्ट तोड़ें, क्योंकि इस्लाम इस्लाम इसलिए नहीं आया है कि हमारी जान चली जाए। प्लीज आप तोड़ें रोजा, और अपनी तबीयत, जो भी आपको मेडिसिन लेनी है आप लें, क्योंकि ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी इंसान करता है कि वो रोजा नहीं तोड़ता और उसी में फिर उसके ज्यादा हालत बिगड़ जाती है। अगर आपकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब है, अव्वल आप रोजा मत रखें उस दिन का, क्योंकि हमें छूट दी गई है कि अगर आप बहुत ज्यादा बीमार हैं, कि अगर रोजा रखेंगे तो आपकी बीमारी बढ़ सकती है, तो आप उस दिन का रोजा नहीं रखें। रमजान के बाद आप उसकी एक कज़ा कर लेंगे, वो ठीक हो जाएगा। और अगर आपने रोजा रख लिया, उसके बाद अगर आपको आपकी तबीयत खराब हो गई या उल्टी की वजह से आपका रोजा टूट गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई गुनाह नहीं होगा। आप रमजान के बाद उसकी एक कज़ा कर सकते हैं, जितने रोजे टूटे हैं उन सबकी कज़ा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, दो टूटे हैं तो दो रोजे आप रमजान के बाद, जब भी आप एकदम फिट रहेंगे, एकदम सही महसूस करेंगे, तब आप रोजा रख सकते हैं। हाँ, असरा कुछ पूछना चाहती है, असरा? एक और एक चीज मिसबा जो मैं करती हूँ, बिकॉज आई लिव इन सऊदी, तो मेरे को इमीडिएटली लोग मिलते नहीं है कि किसको रोजा खिलाने के लिए कहाँ खिलाएं। तो एट द बिगिनिंग ऑफ रमजान, आई हैव ऑलरेडी डन इट फॉर दिस ईयर, पूरे महीने का मैंने किसी के पास, बिकॉज आई एम ओरिजिनली फ्रॉम हैदराबाद, तो हैदराबाद में आई हैव ऑलरेडी मेड के पूरा रमजान का महीना वो खाना जो मेरी एवरेज खाना है, नॉट इंडिया में जो वो उनके तबके में जो भी खा रहे हैं, कोई गरीब है तो उनके पास चाहे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उतने नहीं खाएंगे जितना असरा का? हेलो, शायद आपकी आवाज हाँ, चली असरा गई। मेरे घर में मैं खाती। तो वो अपने इंतजाम कर दिया है कि उनके पास खाना पहुंच जाएगा फॉर द इंटायर मंथ। और देखिए, एक इंसान को रोजा खुलाना है, बट ऑब्वियसली कोई फैमिली है तो आप एक को नहीं देंगे, आपने फैमिली का इंतजाम कर दिया। सो दिस इज समथिंग जो स्पेशली इफ यू वांट टू प्लान अहेड, उसके बाद जो रोजे मैंने रह लिए, आई जस्ट टेक इट लाइक ओके ये मेरे बोनस। वेरी गुड असरा, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट असरा। मिसबा, असरा कह रही हैं कि वो क्या करती हैं रमजान से पहले ही, क्योंकि वो सऊदी में रहती हैं और उनका घर हैदराबाद में So है। that is something I have chosen to do. और सऊदी में yes we can पूरे महीने का हम कर सकते हैं जी। वो हाँ, well, सॉरी, घर नहीं है, बट ओरिजिनली हैदराबाद में है, तो मेरे रिसोर्सेज है कि हैदराबाद में किसी के लिए प्रोवाइड, राइट। तो असरा, रमजान स्टार्ट होने एंड से दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से, दैट्स ऑल कि यू कैन प्लान अहेड। हाँ, राइट, थैंक यू असरा। तो मिसबा, असरा बता रही हैं कि वो रमजान स्टार्ट होने से पहले ही जो निकालना होता है देने के लिए वो निकाल देती हैं और मतलब पूरी एक फैमिली के लिए पहले ही दे देती हैं। उसके बाद अगर वो रोजा रख पाती हैं तो रखती हैं, बट ये एक उनके लिए बोनस की तरह वो पहले ही कर देती हैं, क्योंकि वो उस टाइम कर पाए। ओके, नहीं, एक्चुअली इसमें थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए, फिदिया सिर्फ उसके लिए है जो जिंदगी भर कभी रोजा नहीं रख सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, कोई कैंसर पेशेंट है और उसके सही होने के चांस ही नहीं है, रोजे आ गए हैं, तो फिर वो क्या करेगा, वो रमजान में ही फिदिया देगा। रमजान के अलावा फिदिया नहीं जाता है, रमजान में ही जाता है, और हर एक रोजे का उसी दिन फिदिया जाता है। ठीक है। और जो जो बाद में रोजा रख सकता है, जो एकदम ठीक हो जाएगा, बाद में रख सकता है, या फिर वो एक रोजा रखे फिर एक छोड़े, फिर एक रखे फिर एक छोड़े, अगर वो ऐसा करता है तो उसके लिए फिदिया नहीं है। उसको फिर रमजान के बाद जितने आप काउंट कर लें, लिख के रख लें, और रमजान के बाद जितनी कजा हुई है आप उसकी कजा आप बाद में मेकअप कर सकती हैं। फिदिया सिर्फ उनके लिए है जो कभी लाइफ में रोजा नहीं रख पाएंगे, और हाँ, फिदिया भी सिर्फ रमजान में ही दिया जाता है, उससे पहले या उसके बाद में नहीं। लेकिन मिसबा जब मिसबा, हमने रमजान में ही यानी डेली उनका खाने का इंतजाम किया है कि उनके पास ओके, बहुत डेली अच्छी। खाने का इंतजाम है। इट इज नॉट कि पहले से पूरा दे दिया, नहीं, उनके पास अच्छा, कहीं हमने दुकान में कर दिया है कि दे कैन गो पिक अप द फूड, एंड आई हैव ओके, टेकन केयर ऑफ द एक्सपेंस ऑफ दैट फूड। और सेकेंडली, अच्छी बात ये है। डॉक्टर आदिल सलाही से पूछा था, तो स्पेसिफिकली टाइप 1 डायबिटीज एंड देयर आर अदर कंडीशंस आल्सो,
जिसमें इंसान की सेहत किसी दिन ठीक हो रही है, किसी दिन नहीं हो रही है, लेकिन द रिस्क फैक्टर्स डोंट चेंज। तो जैसा कि डॉक्टर ओके, ने हाँ बताया, डॉक्टर ओवेस जी, सर एंड डॉक्टर ताहिर, के पहले तो यही होता था रूलिंग के नो टाइप 1 कैन एवर फास्ट, वो रूलिंग यस थी। यस, लेकिन अब जी मॉडिफाई हुआ बिल्कुल, है डिपेंडिंग के कौन किस किस्म की मॉनिटरिंग कर रहा है, कौन किस किस्म का जी जी, A1C है। तो मैं गारंटी से नहीं बोल सकती कि मैं रमजान के बाद मेरी दोबारा सेहत ऐसी रहेगी कि मैं फास्ट कर सकूंगी या नहीं। विच आई नो अ लॉट जी ऑफ पीपल ऑन MBI जिनका A1C 7 से ऊपर है, दे विल हैव द सेम इशू कि वो हमेशा वही कैटेगरी में रहेंगे कि दे आर नॉट सूटेड टू फास्ट यस अगर यस यस, A1C हाई हो रहे हैं। राइट जी राइट। बिल्कुल। थैंक यू असरा, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मिसबा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द एप्रोप्रिएट एज की फास्टिंग स्टार्ट करी जाए? किस एज से उनको रोजे रखना स्टार्ट करने होते हैं? देखिए रोजे आप सबको मालूम ही होगा कि रोजे रखना जैसे ही बच्चा बालिग होता है तब से उसके रोजे रखना शुरू हो जाते हैं। यानी अगर लड़की है तो जैसे ही उसके पीरियड्स आएंगे तो तब उसके रोजे फर्ज हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है आजकल लड़कियों में कि पीरियड्स बहुत ज्यादा डिले हो जाते हैं, तो उसमें फिर उसका उसकी एज लिमिट 14 to 15 रखी गई है अगर डिले होते हैं। लेकिन अगर पहले से पीरियड्स उसके आने लग गए हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 इयर्स की जब वो हो गई या 12 इयर्स की हो गई और पीरियड्स उसके आने लगे हैं, नाउ शी इज बालिग, बालिग हो गई है, अब वो उसके ऊपर फास्टिंग फर्ज है। इसी तरह लड़के का भी ये होता है कि जब वो प्यूबर्टी एज टच करता है, जैसे कि उसकी साइंस आने लग जाते हैं, उसके फेशियल बियर्ड आने लग जाती है, उसकी आवाज में चेंज आने लग जाता है, तो यानी उसने प्यूबर्टी अब अपनी हिट कर ली है, तो अब उसके ऊपर रोजा फर्ज हो गया है। ओके और हमें वैसे जैसे मुस्लिम घर में तो क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो प्रैक्टिस करते हैं, तो वो छोटे जब 9 साल के 10 साल के होते हैं तब से वो प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो उनकी आदत पड़ जाती है रोजे की। तो ओके, बालिग होना जो है वो एक एज लिमिट है, उसके बाद से फास्टिंग इज फर्ज। ठीक। थैंक यू मिसबा। ओके मिसबा, अगर कोई प्रेग्नेंट है तो जी, क्या वो फास्टिंग करें या अवॉइड करें? कैसे करें वो फास्टिंग? प्रेगनेंसी में आप बिल्कुल अवॉइड कर सकती हैं। अगर आप में नहीं है इतनी हिम्मत कि आप रख सकें रोजा, तो आप बिल्कुल अवॉइड करें, कोई गुनाह नहीं है। बल्कि अल्लाह की तरफ से ये बिल्कुल छूट दी गई है कि प्रेग्नेंट लेडी हो या फिर वो लेडी जो ब्रेस्ट फीड कराती है अपने बच्चे को, ठीक है, तो उसको एकदम छूट दी गई है कि आप उस वक्त रमजान के रोजे मत रखें जब आप डिलीवरी कर लेंगी और आपका जो बच्चा है वो जो डेयरी का मिल्क है वो पीने लग जाएगा, या फिर जब आप ब्रेस्ट फीड कराना छोड़ देंगी, उसके बाद आप उस उन रमजान की फजा कर सकती हैं, उन रमजान के रोजों की फजा कर सकती हैं जो आपने छोड़े। आप पूरे महीने मत रखें अगर आपकी हालत नहीं है। अगर आपकी सेहत को या आपके बेबी की सेहत को, जब आप प्रेग्नेंट हैं, कुछ भी फर्क आएगा तो उसमें आप प्लीज रोजा मत रखें, कोई सिन नहीं है, ये सब मिसकंसेप्शन है। ठीक है, तो आप रोजा छोड़ें उस वक्त, और बाद में दूसरे जब आप डिलीवर कर लें, ब्रेस्ट फीड भी हो जाए, बच्चा बड़ा हो जाए, उस वक्त आप पूरे रमजान के महीने की फजा कर सकती हैं। थैंक यू मिसबा। मिसबा, एक और चीज आपने बोला था कि आपने मुझे इमाम और इस्लामिक स्कॉलर के बीच में डिफरेंस यस बताया था। तो एडवाइस लेने यस, के लिए अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज से, मेडिकेशन से, या अगर कोई भी जैसे फास्टिंग से रिलेटेड एडवाइस लेनी है, तो हु इज द राइट पर्सन? आपने मुझे बताया था कि 2 बच्चे थे, एक बार आप वो स्टोरी बता दें ताकि लोगों को पता चल जाए। कि 2 बच्चे थे, वो इमाम के पास गए, उन्होंने पूछा कि हमें इंसुलिन पे डाला गया है। इमाम ने कहा कि इंसुलिन लगाना अल्लाह प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रिलीजियस प्रैक्टिसिंग के अगेंस्ट है, और आप इंसुलिन मत दीजिए। दोनों बच्चों का इंसुलिन बंद करा गया, दोनों बच्चों की डेथ हो गई। तो मैंने यही स्टोरी मिसबा को भी बताई थी, तो यस मिसबा ने मुझे डिफरेंस बिल्कुल, बताया। तो मिसबा, आप वो डिफरेंस बताएंगे सबको? जी बिल्कुल। देखें, हर इमाम आलिम नहीं होता है। प्लीज आप लोग ये जानें कि आलिम और इमाम में डिफरेंस क्या होता है। आलिम जो है वो रिलीजियस स्टडीज पढ़ता है,
ठीक है, कई साल तक वो ये सारी चीजें पढ़ता है, एक स्कॉलर बनता है। इमाम कोई भी बन सकता है जिसको अच्छे से कुरान पढ़ना आता है, जो हाफिज है। सो आपको ये डिफरेंस जानना होगा कि आलिम, हाफिज और इमाम में क्या फर्क है। ठीक है, हो सकता है कि कई मस्जिदों में आलिम ही इमाम हो, तो वो अच्छी बात है, बट अगर आप किसी से इमाम से मसला पूछने जा रहे हैं तो प्लीज ये कंफर्म करें कि आर यू एन इस्लामिक स्कॉलर और नॉट। अगर वो नहीं है तो उनसे मसला नहीं पूछें। स्कॉलर और इमाम में बहुत फर्क है। आप सिर्फ मसला एक स्कॉलर से ही पूछें, क्योंकि इंसुलिन लेना बिल्कुल जायज है। और रोजे में इंसुलिन लेना, क्योंकि वो इंजेक्ट किया जाता है, उससे रोजा नहीं टूटता है। तो प्लीज अपनी सेहत का या अपने रिलीजन का मतलब इसको रिस्क मत लें। सिर्फ स्कॉलर से ही मसला मसला पूछा करें आप। थैंक यू मिसबा। कोई और मिसबा से क्वेश्चन पूछना चाहता है? अदरवाइज हम इसके बाद टेक्निकल क्वेश्चंस पे जाएंगे। ओके, सो हम मिसबा, आप रहना चाहते हैं तो यहाँ पे रह के सुन भी सकते हैं। कैमरा ऑफ करना चाहते हैं तो कैमरा ऑफ भी कर सकते हैं। अब हम डॉक्टर्स से। अच्छा, एक मिनट। हाँ जी। ये चीज मैं बताना भूल गई। देखिए, इमाम वो होता है जो नमाज पढ़ाता है। मैं उनसे बात कर रही हूँ जो सब लोग सुन रहे हैं। इमाम आप जानते ही होंगे कि वो होता है जो नमाज पढ़ाता है, राइट। और आलिम वो होता है जो मुकम्मल इस्लामिक स्टडीज पढ़ता है और उसी हिसाब से फतवे देता है और मसाइल बताता है। ठीक है। इसी तरह हाफिज वो होता है जो कुरान को मेमोराइज करता है अरबिक में, पूरे कुरान को। तो आपको मसले और दीन की जितने भी इल्म है वो स्कॉलर से लेने, आलिम से लेने। ओके, दैट इज द मेजर डिफरेंस। थैंक यू मिसबा। थैंक यू। थैंक यू। ओके, थैंक मिसबा आप यू। यहाँ पे रह भी सकते हैं, कैमरा भी ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि अब हम टेक्निकल ओके। क्वेश्चन पे जाएंगे। ओके। ठीक है, थैंक यू मिसबा सो मच फॉर एडिंग वैल्यू टू दिस। ओके, अब मैं कुछ थैंक यू सो मच। पॉइंट्स ऐड करना चाहती हूँ। डॉक्टर ओविस, ये आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्या हमें फास्टिंग के टाइम, क्योंकि रमज़ान में हमारा दिन और रात में ही डिफरेंस आ जाता है, क्या हमें अपने इंसुलिन के टाइमिंग्स को चेंज करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है ये। सो अगर कोई टाइप 1 4 बार इंसुलिन कर रहा है, लाइक 3 बार प्री पैंडल, 3 बार आर कर रहा है, बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच और बिफोर डिनर, और 1 बार लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन लगा रहा है, जैसे इंसुलिन एन हो या लॉन्ग एक्टिंग ग्लार्जीन हो, तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर किसी डायबिटिक का HbA1c, ग्लाइसेमिक पार्ट जो है वो अच्छा ठीक ठाक कंट्रोल है, वेल कंट्रोल डायबिटीज है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो उनमें जो रात वाला इंसुलिन है, जो नॉर्मली बेड टाइम हम बताते हैं, तो उसको हम 10 to 20% उसका डोज कम कर देते हैं, जो टोटल डेली प्री रमदान से जो वो ले रहा होता है। और जो लंच टाइम इंसुलिन है तो वो बंद करना होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एब्सटेन होता है फ्रॉम ईटिंग। और जो सहरी का जो इंसुलिन टाइमिंग है, सो जो इंसुलिन हमेशा खाने से पहले करना है, तो खाना हम 2 ही बार मेन जो होता है, सहरी और इफ्तार। सो जो सहरी का डोज है, अगर कोई जानता है कि इंसुलिन कार्ब रेशो और इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर करेक्शन जानता है, कि कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग जानता है, तब वो बराबर खाने के हिसाब से वो अपना इंसुलिन डोज लगा सकता है। एज पर द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस दे कैन टेक द इंसुलिन। बट अगर वो कोई फिक्स डोज पे है, मेजोरिटी ऑफ जो मैंने देखे हैं वो फिक्स डोज पे होते हैं, R 10 10 10, N 15। सो उनमें क्या होता है कि वो अपना जो सहूर टाइम का जो इंसुलिन है उसको रिड्यूस करना है बाय 10 to 20%, इवन 30%, ताकि रिस्क ऑफ लो ब्लड शुगर कम हो जाए। और अगर कोई जो अनकंट्रोल डायबिटीज है, मतलब जिसका शुगर HbA1c 9% से ज़्यादा है, तो रिकमेंडेशन है तो जो इनका रात वाला इंसुलिन है, इंसुलिन एन, वो उनको बराबर वैसे ही देना है जैसे वो देते हैं। और जो सहूर टाइप का इंसुलिन है वो उनको रिड्यूस करना है बाय 10 to 20%। अगर कोई प्री मिक्स्ड इंसुलिन यूज कर रहा है दिन में 2 बार, तो उनको जो यूजुअली जो उनका डिनर टाइम का इंसुलिन होता है वो उनको शिफ्ट करना है सहूर टाइम पे, और उसको हाफ करना है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई 20 यूनिट ले रहा है डिनर टाइम, वो ही 20 यूनिट उनको सहूर में लेना है, बट उसका हाफ करना, डेट मीन्स 10 यूनिट्स ही करने हैं।
और जो मॉर्निंग यूजुअली जो बिफोर ब्रेकफास्ट इंसुलिन प्री मिक्स्ड में है वो उनको इफ्तार के टाइम लेना है. So these are the timings. So timings are two, which is sehri and iftar, and post iftar you can give NPH, long acting. Thank you, Dr. Okay, Ovid. there is one thing that I wanted to add, since we brought a religious scholar also. जो guidelines मैंने आपको कही कि जो consensus बना था 2020 में, उन्होंने recommendation ली थी from the Mufti of Egypt. So जो risk stratification जो बना था, तो उसमें उन्होंने जो low risk, moderate risk और high risk बनाया था. तो जो low risk category था 0 to 3 जिनका risk आता था as per their risk score, तो उनमें fasting obligatory है as per the Islamic recommendations. So advice not to fast if not allowed, unless patient is unable to fast due to physical burden of fasting or needing to take medication or food or drink during the fasting hours. This was for the low risk category. जो moderate risk हमने जो बनाया, तो उसमें जिनका score 3.5 to 6 आता है, उनमें जो religious recommendation है वो है fasting is preferred, but patients may choose not to fast if they are concerned about their health. Okay, so if patient does not fast, they must follow medical recommendations, including regular food glucose monitoring. This is the recommendation from the religious scholar. And if somebody is having high risk, like score more than 6 है, तो उनमें क्या है, advice against fasting. So उनको आप recommendation से आप better है आप fasting ना रखें. Thank you, Dr. Ovis. आपने जो stratification share करा, that is very interesting. In fact, we all should read about it, and it should be forwarded to all the doctors also, so that हर एक अपने डॉक्टर से आराम से बिना घबराए कि डॉक्टर डांटेंगे इसके बारे में बात कर सकें. So I think that was a wonderful share you have done. Okay, Dr. Tahir, I want to ask कि जब कोई टाइप 1 फास्ट रखना चाहता है, तो एक एज अ फैमिली और कम्युनिटी हम लोग उनकी कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, स्पेशली अगर उनको बीच में फास्ट तोड़ना पड़ जाए. सो डेफिनेटली एक इनकरेजमेंट और एक इमोशनल सपोर्ट हमें देना चाहिए. आई मीन व्हेन सपोज द पर्टिकुलर आई मीन टाइप 1 वांट्स टू कीप द फास्ट बट समहाउ हाइपर ही हैज टू ब्रेक द फास्ट. सो उसकी एनकरेजमेंट, उसको आई मीन रिलीजियस सपोर्ट एज वेल एज इमोशनल सपोर्ट भी देना चाहिए. नंबर 2, आई मीन उसका मील प्रिपरेशन, मेडिकेशन रिमाइंडर, मॉनिटरिंग शुगर, इन तीनों चीजों पे उसको सपोर्ट करना चाहिए फ्रॉम ए फैमिली और कम्युनिटी पर्सपेक्टिव. एंड एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट करना चाहिए. इसके फॉर एग्जांपल मैं अपना ही एक एग्जांपल देता हूँ. ऐसे बहुत बार हुआ है कि आई एम नॉट एबल टू डू फास्ट, बट मैं वो ओपनली बोल नहीं पाता था. तो पब्लिक को मालूम था कि मैं फास्ट कर रहा हूँ, बट बेसिकली मैं नहीं कर रहा हूँ. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स इट शुड नॉट बी देयर. सराउंडिंग में जो है दे शुड एम्पावर द गाय कि ठीक है चलो आप नहीं कर रहे हो तो इट्स फाइन, इट्स एक्सेप्टेबल थिंग्स. यू आर नॉट लाइक don't discriminate those guys. So that is the main issue. जैसे कि मुझे बहुत बात छुपाना पड़ा, it should not be. आपको लगता था कि आप ही की कम्युनिटी के लोग आपको जज करेंगे, हाँ हाँ फैमिली वाले भी, एग्जैक्टली. किड्स को भी नहीं बताते थे. दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट शेयर्ड बाय यू, डॉक्टर ताहिर. ओके असरा, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम यू. यू सेड दैट एक्सरसाइज बहुत जरूरी है. डू यू रिकमेंड एनी पर्टिकुलर टाइम जब एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे कि क्योंकि सुबह We do, या जी, we do, महक. We tend to say कि रोजा खोलने से पहले अगर half an hour cardio कर सको, like a light walk. I'm not talking about HIIT exercise, राइट. but a light walk. आप एक आधा घंटा walk कर सको, that would be fantastic for getting your blood sugars in control. But keep an eye कि अगर आप पहले से hypo पे जा रहे हो, if you're already at 80, then be careful about that walk. Similarly, हम Saudi में we all have our gyms that work till 2 in the night in Ramzan. हमारे timings बदल जाते हैं, तो हम तरावी के बाद जाते हैं, which is around 10:30, 11, and we do HIIT exercise with weight training from 11 to 12. That is very 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 special only in Saudi Arabia. दुनिया में और कहीं तो ये होने नहीं वाला है. But जो घर पे करते हैं exercise, they can choose to do that. राइट. Saudi में yes, राइट. gyms are extremely and you're eating a slightly fatty food just because you're trying to enjoy your iftar. So
people who do not work out most of the time, you will be surprised कि रमजान में सब workout करना शुरू कर देते हैं. So it's very much part of our lifestyle in Jeddah, in Riyadh, in Tehran, Dammam. So yeah, we do it. Practice बहुत ज़्यादा करते हैं compared to what I have seen in India myself. Great, wonderful. Yeah. Yes, sir. Asra, I just want to add Okay. one thing. In Ji. Ramadan, although name is fasting, but I feel our overall calorie consumption is quite higher than normal month. Overall, like हम लोग is it अलग right? करते हैं थोड़ा सा. I tend to take a salad. Recommendation सबके लिए यही है. We take a salad, we give it a break, 15-20 minutes नमाज वमाज पढ़ लो और फिर आप आके अपना मेन मील खाओ. And of course you're going to pre-bolus. तो उसमें होता है कि मेन मील में भी we still stick to the food order. We still stick to the plate method. तो जो normal इफ्तारी का खाना जो स्पेशली एवरी कंट्री हैज अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग इट. तो मैं आई विल नॉट हैव द टिपिकल समोसास भजियास एंड चाट्स. वीक में 1-2 दिन श्योर, एक आध चीज यस, बट नॉट एवरी डे. So I keep my meal exactly what I would eat as a healthy dinner. And उसके बावजूद something that I've experienced 2 years in a row is high resistance. क्योंकि जब बहुत फास्ट करके आप हमारा about 16 hours का फास्ट हो रहा था, तो 16 hours के बाद जब खाना मिल रहा था तो blood sugars do shoot up pretty high. तो we need to make sure कि pre-bolus बहुत पहले से लिया हुआ है. On a pump it's easier कि मैं basing बढ़ा सकती हूँ. Right. So that is something we do keep in mind. Just because Ramzan, it doesn't mean you change into bhajiyas and talawa, puri and saag and all that. थैंक यू डेफिनेटली असरा, थैंक यू सो मच. मैं 2 पॉइंट्स पे फोकस करना चाहती हूँ जो असरा ने शेयर करा. एक उसने कहा कि हम लोग पैटर्न ईटिंग करते हैं. पैटर्न ईटिंग में क्या होता है, आप पहले सैलेड खाते हो, उसके बाद अपना प्रोटीन्स खाते हो. तो क्योंकि आप रमजान रोजा रख रहे हो तो आप सैलेड्स खा सकते हो. प्रोटीन में आप अपना चिकन खा सकते हो. जरूरी नहीं है कि आप फ्राइड चिकन खाओ. अगर आप चिकन खाते हो, आई एम नॉट श्योर, तो अगर आप खाते हैं तो आप रोस्टेड चिकन खा सकते हैं या फिर एग खा सकते हैं, या अगर पनीर खाते हैं तो पनीर खा सकते हैं. और उसके बाद आप अपनी रोटी खाइए. तो इसको हम पैटर्न ईटिंग कहते हैं. दूसरा पॉइंट उसने बोला प्लेट मेथड. प्लेट मेथड क्या होता है कि आप एक प्लेट, जब भी कोई एक प्लेट रखी जाती है, उस प्लेट का 50%, जो हमारी नॉर्मल खाने की जो प्लेट होती है, रोटी वाली प्लेट बड़ी, उसका 50% हमेशा नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स होना चाहिए. यानी कि आप कोई भी सब्जी ले सकते हैं और साथ में सैलेड ले सकते हैं. उसका 1/4 जो है प्रोटीन होना चाहिए. अगेन आप प्रोटीन किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, और बाकी जो 1/4 बचता है वो आपके ग्रेन्स होने चाहिए. ऑब्वियसली लाइक असरा ने सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली, वंस इन अ वाइल बी, मतलब गेट लूज, ईट एवरीथिंग यू वांट टू ईट, बट मेक श्योर कि इट इज नॉट योर एवरी नाइट्स रूटीन. यू हैव टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल वाइल स्टेइंग हेल्दी. और रेजिस्टेंस पे जो असरा ने बोला, उसके लिए मैं कुछ बताना चाहती हूँ. अभी इस पैड में मैं थी और आई थिंक डॉक्टर ओवेस भी वहीं पे थे. हमने एक बहुत अच्छा स्टडी सुना था ऑन रमजान उन्होंने किया था. इट वाज आई इन वन ऑफ द इस्लामिक स्टेट ओनली, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द कंट्री जहाँ पे वो हुआ था. एंड दे रियलाइज्ड कि कुछ लोगों के साथ रेजिस्टेंस रिवर्स हो गई थी, प्रोवाइडेड दे आर ईटिंग हेल्दी. when they were doing this long fasting and eating healthy in the night, उनकी resistance reverse हुई. and not only that the resistance reversed, उनके after रमजान, मतलब रोजे खत्म होने के बाद उनकी insulin requirement drastically drop हो गई, provided they are eating healthy. That was the biggest condition. I don't know, Dr. Ovis, if you remember that, there was a beautiful case presentation, e-poster presentation on this. Yes. So about the insulin resistance, like what has been seen in studies, क्या होता है कि when you are doing prolonged fasting, तो उसमें क्या होता है कि type 1 diabetes में तो insulin जा नहीं रहा है, तो there is going to be more breakdown of fat. So excess of free fatty acids, that is the way the body makes glucose, gluconeogenesis. So whenever there is more free fatty acids, तो insulin resistance देखा गया है कि अक्सर रमजान में बढ़ जाती है. And the same happens when you are back after the Eid, तो वो resistance कम हो जाती है. So people become more insulin sensitive. So I was actually reading that study in the morning. It happens, resistance increases.
Also, Dr. Ovis, would you like to shed some light on hydration, importance of hydration? असरा ने बोला कि मैं 1-1 घंटे बाद रात भर पानी पीती थी सुबह 5 बजे तक, तो why hydration is very important? अगर आप उसके बारे में कुछ बताएं। सो वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स जो है, जो डॉक्टर ताहिर ने जब मेंशन किया कि एक है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन इज अ वेरी हाई रिस्क फॉर पीपल विद डायबिटीज, और उनको डिहाइड्रेशन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, जैसे थ्रोम्बोसिस, दे कैन डेवलप अ क्लॉट अगर डिहाइड्रेशन हो गई। तो रिमेनिंग वेल हाइड्रेटेड, जैसे कि द स्टेट फ्रॉम वेयर आई बिलोंग इज कश्मीर, यहाँ पे यूजुअली अभी तो रमज़ान थोड़ा ठंडे मौसम में स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज इट्स कोल्ड स्टिल 1 डिग्री 2 डिग्री, या इवन रात को माइनस चला जाता है, तो लोगों का जो पानी का इंटेक है वो ऐसे भी कम हो जाता है। और इनसेंसिबल लॉस, हम गर्म एनवायरनमेंट्स में बैठते हैं इन फ्रंट ऑफ हीटर्स, तो लॉट ऑफ इनसेंसिबल लॉस हो जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप वेल हाइड्रेटेड। पर्टिकुलरली आपको हाइड्रेशन सहूर टाइम में ज़्यादा लेना है। यू हैव टू ड्रिंक एडुकेट वाटर, एज असरा सेड, she keeps drinking water every hour, if I'm correct. So keeping well hydrated, and plus जब आप इफ्तार का टाइम है, यहाँ पे यूजुअली लोग खोलते ही हैं रोज़ा with a basil seed water that is mixed in basil seeds and water, and they add some sugar. Normally लोग वो पीते हैं। तो it is very important to be well hydrated during fasting, so दो ही टाइम हमें मिलते हैं, which is सहूर and iftar. So we should ensure that we drink adequate, and that should be non-caloric. Like लोग काफी वो juices वगैरह पीते हैं। I think हमने डाइट के बारे में ज्यादा बात I'm coming next on it. I'm coming next on I it. think we should bring some dietitian or nutritionist who can talk about the food that we eat. So most of the people up to I just want to mention here that fasting is feasting as well. So ये एक ऐसा महीना है, इस महीने में हम वो चीजें खाते हैं जो हम नॉर्मली नहीं खाते हैं। हर दिन कुछ ना कुछ नया बनता है, और देन इट कम्स विद स्वीट डिशेस। सो हर दिन नया स्वीट डिश भी बनता है। सो अक्सर देखा गया है कि आम, as Dr. Tahir said, ki we take more calories during Ramadan time than other days. So I think we should touch this food as well. I was about to come on food, very important. Yeah. Mehak, can I just intercede with the water intake? जहाँ हम CGM पे इतना heavily rely कर रहे हैं कि blood sugar सही हो। अगर आपको पता है, I mean, you use a CGM, I do, and anyone who's used a Libre या Medtronic या Dexcom, जो भी CGM आपको हो, उसके लिए basic is पानी। अगर पानी बॉडी में नहीं आएगा, तो CGM के रीडिंग्स जिसपे हम अपनी पूरी दिन का डिपेंड कर रहे हैं कि कैसे मैनेज करेंगे, अगर वो ही सही नहीं है, तो फिर how are you going to have the right blood results coming in? Exactly. So that's why pani is really important, and I'm literally trying to say कि जो घंटे पानी नहीं पिएंगे, I still want to be covered with the pani I've already had, ताकि वो आगे के जो 12-13 घंटे 16 घंटे का रोजा है उसमें पानी लो ना हो जाए। Very, very Yeah. true. तो असरा ने ये पॉइंट शेयर किया है, और जो मेरी कम्युनिटी के हैं उनको ये पता भी होगा, और जो लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम है उनके लिए मैं ये पॉइंट रिआइट्रेट कर देती हूँ। जब हम सीजीएम लगाते हैं वो हमारे इंटेस्टिशनल फ्लूइड्स में लगता है, और अगर आप पानी नहीं पीते तो आपके वो फ्लूइड्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से रीडिंग की एक्यूरेसी पे इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि इफ़ यू वांट योर रीडिंग टू बी मोर एक्यूरेट, ड्रिंक मोर वाटर। पर मोर का मतलब ओवर भी नहीं पीना है। इट मीन्स यू हैव टू ड्रिंक enough water as per your weight. So that is very important. Okay, I wanted to share one story with all of you regarding an 11-year-old child girl who came to me and she said, I want to keep rosa. And I was like, okay, let's decide how you want to keep it. And the most important thing I did with the mother, जो मुझे लगता है कि हर एक को अपने डायबिटीज एजुकेटर्स के साथ बैठ के या अपने डाइटिशियंस के साथ बैठ के करनी चाहिए, इस रोजे को खोलना कैसे है, और रोजे से पहले जो आप खाते हैं इफ्तारी, इफ आई एम करेक्ट, या आपने क्या खाना है उस टाइम पे। तो मदर ने कहा कि देखो सब मीठा खाएंगे, तो मैं इसके लिए भी कुछ मीठा बनाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, हम डिसाइड करते हैं कि फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड आपके घर में क्या बनेगा। हम लोगों ने मीठे की डिश भी डिसाइड करी, और वो मीठा बनेगा कैसे, कब फ्रूट्स खिलाए जाएंगे, मीठे में हम क्या डेजर्ट में डालेंगे, शुगर फ्री डेजर्ट डाल दिया या डेट स्वीटेंड मीठा बना दिया, क्योंकि आप लोग डेट्स जरूर खाते हैं। तो हमने डेट्स यूज करे खीर को मीठा करने के लिए, और उसको उस तरीके से दे दिया बच्चे को।
तो हमने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स बनाए जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। कोई भी अगर फास्ट रखना चाहता है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि फास्ट खोलते ही खाना क्या है। जैसे मैं असरा ने बताया कि मैं सैलेड खाती हूँ सबसे पहले, उसके बाद नमाज पढ़ती हूँ, उसके बाद अपना मेन मील पे जाती हूँ। सो सैलेड क्यों खानी है, इस पे मैं एक पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ। बीइंग फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ न्यूट्रिशन, जब आप कुछ नहीं खाते हो पूरा टाइम, योर बॉडी इज ऑन रेस्ट। आपके अंदर के सारे जो प्रोग्राम्स हैं, सारे पुर्जे जिसे हम कह सकते हैं, अंजर पंजर, सब रेस्ट पे हैं। अब सडनली आप उसको कहो भाई चलना है, तो सीधा आपने डाल दिया समोसा, अब चल फास्ट। इट टेक्स टाइम। गाड़ी भी चलती है एकदम से 100 की स्पीड पे तो नहीं चलती ना, 10 20 30 40 50 फिर 100 पे आती है। तो सिमिलरली वो रेस्ट पे आपकी बॉडी है, उसको धीरे 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 फ्यूल दो ताकि वो चले। डोंट ईट एवरीथिंग इन वन गो। पहले बेस्ट वे टू ब्रेक योर फास्ट इज ईट सैलेड। ऑफ कोर्स अगर जो अभी आप पहले खजूर लेते हैं या जैसे आपने कहा बेसल सीड्स वाटर लेते हैं, दैट यू कंटिन्यू एज योर रिलीजियस प्रैक्टिस, बट उसके बाद सैलेड खाएं। आई वुड से टेक 100 grams ऑफ सैलेड, ईट इट तसल्ली से, ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। सैलेड से एक और अच्छी चीज होगी कि आपका जो जंक खाने का क्रेविंग होगा ना वो कम हो जाएगा। सो सबसे पहले अपनी बॉडी में सैलेड या अगर आप सूप खाते हैं तो वो डालें। उसके बाद आता है आपका वॉट एवर यू वॉन्ट टू ईट। मेक श्योर यू आर ईटिंग हेल्दी, सेम थिंग जो आप लोग अपने रेगुलर डेज पे खाते हैं। एक आधा बीच में कोई छोटा सा चीट चीज करनी है कि आज मैंने थोड़ा सा समोसा खाना है या कुछ खाना है, वो खाइए। लास्ट कम्स योर डेजर्ट। डेजर्ट किसकी फेवरेट नहीं है, सबकी फेवरेट है। इफ आई हैव टू टेल अ डेजर्ट, नो व्हाट आई वुड से, डेजर्ट को नॉन फ्राइड रखो। नॉन फ्राइड कैसे रखेंगे, जैसे खीर, आई डोंट नो व्हाट यू से टू खीर इन योर लैंग्वेज, बट मेरे ख्याल से आप लोग It's kheer. खीर It's बोली। kheer It's in every key language. ओके गुड। everywhere. खीर या सेवैयाँ, ओके, खीर या सेवैयाँ अगर बनाते हैं तो आप खीर या सेवैयाँ ही बनाइए। दूध में बनाइए, चाहे अगर आप नॉर्मल लैक्टोस इंटॉलरेंट है तो प्लांट बेस्ड मिल्क में बनाइए उसको। खजूर से या फिर शुगर फ्री से मीठा करें। क्योंकि खीर का मुझे बेनिफिट पर्सनली क्या लगता है, इट इज नॉट वेरी हाई इन फैट, इट हैज नथिंग फ्राइड, सो इट्स समथिंग वेरी बैलेंस्ड डेजर्ट। बट अगर आपको कुछ और खाना है, जैसे हलवा खाना है या गुलाब जामुन या रसगुल्ले खाने हैं, तो गुलाब जामुन से ज्यादा प्रेफर करूंगी रसगुल्ले, बिकॉज रसगुल्लास आर नॉट फ्राइड, दे आर बॉइल्ड इन शुगरी वाटर, जिसको आप शुगर फ्री वाटर में भी बॉईल कर सकते हैं। अगर आपने रोज खाना है तो, और अगर वंस इन अ वाइल खाना है तो आप मीठे वाला ही खाइए, इंसुलिन को एडजस्ट करिए। इंसुलिन कार्ब रेशियो पता होना बहुत जरूरी है इस टाइम पे, स्पेशली व्हेन यू आर ईटिंग सो मच। अपने डॉक्टर के पास जाइए, बैठिए और कहिए कि लेट्स अंडरस्टैंड इंसुलिन कार्ब रेशियो एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर। पूरी रात भर नहीं खाना है, बॉडी को रेस्ट भी चाहिए। ये नहीं है कि हमें पूरी रात मिली है तो हम पूरी रात खाते ही रहेंगे। वन ऑफ माई मुस्लिम फ्रेंड्स शेयर्ड दिस विद मी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि मैं, हम में से ना कई लोग इसको बहुत गलत तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। हम क्या करते हैं, हम रात भर खाते रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि इट इज नॉट कि आप रात भर खाओगे, आप रात भर इकट्ठे होके प्रे करते हो, यू टॉक अबाउट मोर ऑफ योर रिलीजन, एंड इट्स लाइक अ सेलिब्रेशन। जैसे हम लोग भी दिवाली करते हैं, तो रात भर नहीं दिवाली के लिए करना है, इट्स लाइक इट्स अ टाइम। सो ईटिंग हैज टू बी डन फॉर अ सर्टेन टाइम ओनली, that's very important. Okay. Anything you feel I've left important which you would want me to put light on? Dr. Owais, Dr. Tahir, Asra? I Are we going think to in conclude? future, I'm sorry? yeah. Are we concluding the session now? I will conclude the session. First, we'll take the questions. Okay, before we take the questions, I think Dr. Tahir wanted to say something. Yeah. Yeah, no, just wanted to, I mean, learn a little bit future of the T1D management. Hopefully by 780G or all the closed loop, this discussion in the coming days will not be there. No, nothing will be more different apart from the diet and everything. True. Yeah. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विद कमिंग टेक्नोलॉजी। दो इंडिया में सर सबसे बड़ा कंसर्न है हमारा कि टेक्नोलॉजी की अफोर्डेबिलिटी नहीं है हर एक के लिए, बिकॉज लाइक 780G इज नाउ 6 लाख रुपीज एंड उसका मंथली सप्लाईज 22 to 25,000 पर मंथ है। इंडिया में थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी का कंसर्न आता है, बट होपफुली वी कैन कम अप विद बेटर वेज टू इनकॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी इन आवर टाइप 1s।
ताकि हम लोग सबकी हेल्प कर पाए, and hoping for the best when it comes to technology. So, can I open the floor for the questions? So Mehak, I think before we conclude, before we start the question answer, if we have any, just I want to highlight a few things like which are very important as far as the physicians are concerned. So most important, any person who wants to fast, first thing is he should talk to his doctor, treating doctor. They will do appropriate risk quantification and exemptions and removing misconceptions. Okay, then second component is blood sugar monitoring. Third is, like we said, about fluids and dietary advice. Fifth is physical activity and exercise advice, how to do it. Then medication, very important, medication adjustment and test fasting. Then when to break the fast, what is the time to break the fast if you have any of the complications. And most important, recognizing symptoms of hypo and hyperglycemia. Very important point, Doctor. Thank you so much for summarizing it so nicely. Okay, so now I'll start the questions. First question is by Zunaira. Zunaira wants to know कि बोलस जो है इफ्तार से पहले लेना है या सैलेड खाने के बाद लेना है, जब नमाज कर ली हो उसके बाद. Dr. Ovis, you want to say something? You are on mute. Sorry, so if you are taking just salad to break your fast, then I don't think you should take bolus at that time. जब आपका major meal जब हो, if you are planning to eat the carbohydrate food like rice, roti, I think you should take the preparendial insulin depending on which type of insulin you're using. If you're using an analog, you can take it 15 minutes before taking the major meal, which would be, or if you're taking a regular insulin, तो आधा घंटा पहले आपको bolus लेना पड़ेगा. एक इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड कर देती हूँ जो असरा ने बोला था. कई लोगों को रेजिस्टेंस हो जाता है क्योंकि हम पूरा टाइम फास्ट कर रहे होते हैं, तो ऐसे में इंसुलिन पहले लेना है अगर शुगर्स ऑन दी हायर साइड है. स्पेशली अगर 180 के आसपास शुगर है तो इंसुलिन पहले लीजिए, फिर सैलेड खाइए. अगर शुगर कईयों की 80 की तरफ होती है, लोअर साइड पे है, तो लाइक डॉक्टर ओविस सेड कि पहले सैलेड खाइए, बाद में अपना इंसुलिन लगाना है. तो अपनी स्टेटस जानना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं. और कईयों का बहुत ज्यादा हाई भी चला जाता है बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन. जब हम लोग पानी नहीं पीते तो कईयों का शुगर्स 250 तक भी चला जाता है. तो ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि हमारे शुगर्स क्या हैं. एम आई करेक्ट डॉक्टर ओविस? You are on mute. Yes. So is it for the ones who are because this concept that is it for someone who's on the pump or someone who's on simple MDIs as well? MDI and newly diagnosed. Okay. Others, do you have any question? Anyone has any question? If I not, think we did not talk about correction boluses. Suppose somebody is running high oh, very important point. during the fasting. What is the way to give correction boluses and how much correction can we give? Right. Do you want to share or do you want me to Yeah, share? so I was exactly reading about the guidelines. So they said they shouldn't, you can take corrections after every 3 hours, but you should not give too much of corrections, which can lead to staking of insulin and can lead to a severe hypoglycemia. So I think simple इसमें ये है कि अगर आपकी sugar at any point of time 300 से ऊपर जा रही है, I think that is the time where you should break the fast. Right. Exactly. डॉक्टर ओविस, थैंक यू. एक चीज मैं है ना इसमें ऐड करना चाहती हूँ डॉक्टर ओविस. डॉक्टर ओविस ने एक पॉइंट बताया था कि आपको अपना इंसुलिन डोजेज रिड्यूस करना है. तो क्योंकि आप फास्ट कर रहे हैं तो उस दिन आपकी सेंसिटिविटी और अब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा अच्छा होगा. तो आईएसएफ डोज रेगुलर डेज जैसा नहीं लगेगा. मोस्ट लाइकली आपका आईएसएफ डोज कम यूज होगा. यानी कि अगर आप जनरल डेज पे 3 यूनिट या 4 यूनिट लगता है 300 से 150 में आने में, हो सकता है फास्टिंग डे पे 1 यूनिट ही काम कर जाए. सो ये अपने डॉक्टर के साथ बैठ के जरूर डिसाइड करें कि व्हाट आर योर डोजेजेस. नेक्स्ट टू डॉक्टर ओवेस, सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं चाहूंगी आप डीकेए और सिर्फ कीटोन्स में डिफरेंस बता दें, क्योंकि किसी का क्वेश्चन है कि
डीके पॉसिबल है फास्ट करने में अगर शुगर्स नॉर्मल है, तो कीटोन्स होना और डीके होना दोनों में फर्क बता दें। सी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो है वो एक मेडिकल इमरजेंसी है। ओके, वो आप कभी भी घर पे जाके मैनेज नहीं कर सकते हैं। वो हमेशा मैनेज होगा एक हायर सेंटर में, वो क्लिनिक में भी मैनेज नहीं होगा। सो कीटोसिस जो है इट्स अ डिफरेंट थिंग। कीटोसिस नॉर्मली हैपन्स अगर कोई फास्ट रख रहा है। नॉर्मली क्या होता है, मैं थोड़ा सा फिजियोलॉजी आपको समझाऊंगा कि जब हम खा रहे होते हैं वेल फेड स्टेट, नॉन फास्टिंग स्टेट में, तो हमारा इंसुलिन जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु डोंट हैव डायबिटीज। तो इंसुलिन लेवल्स हाई होती है व्हेन यू आर ईटिंग। सो इंसुलिन हार्मोन इज अ हार्मोन ऑफ वेल फेड स्टेट। सो जब भी आप खा रहे हैं तो आपका इंसुलिन ज्यादा है, तो जितना भी आप एक्स्ट्रा खा रहे हैं वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फैट एंड ग्लाइकोजन इन द लिवर। So, अब somebody who is a non-diabetic and he is fasting, तो उसमें क्या हो जाता है कि इंसुलिन लेवल्स आपकी डिप हो जाती है क्योंकि आप नहीं खा रहे हैं। तो उसमें कुछ जो बायोकेमिस्ट्री है, मे बी हमारे जो ऑडियंस है वो ना समझे, तो उसमें क्या होता है कि ब्रेक डाउन हो जाता है फैट का। सो फैट पिघलने लगता है, तो उससे कीटोन बॉडीज बनती है। सो कीटोन बॉडीज हमारा एक सोर्स ऑफ एनर्जी रहता है व्हेन वी आर नॉट ईटिंग। ठीक है। तो कीटोन बॉडीज से कीटोन्स बनते हैं। तो किसी का कीटोन बॉडीज पॉजिटिव होना डजंट मीन कि वो प्रॉब्लम है। वो नॉर्मली स्टारवेशन में, फास्टिंग में हो सकता है, आपके यूरिन के साथ आपके ब्लड में कीटोन्स बढ़ सकते हैं। मगर जो टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज में जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, इसमें एब्सोल्यूट डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन होती है। तो इंसुलिन होता ही नहीं है। जब आप फास्टिंग कर रहे हैं, आप इंसुलिन भी नहीं लगा रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि आपका जो जो फैट है वो ज्यादा गलने लगता है। तो फ्री फैटी एसिड्स बहुत ज्यादा बनते हैं, और जितना एक्सेस free fatty acids, they go into the ketogenesis pathway. So more and more ketones are formed and they form acidic environment. That's called as ketoacidosis. So ketoacidosis is a medical emergency. तो उन लोगों को उल्टियां आएंगी, पेट में दर्द होगा, they will feel very sick. So this is the major difference. So DK is a medical emergency, whereas just having ketone bodies or ketone in the urine, that may normally happen, but you have to be very careful if you are dehydrating normally। कि जब शुगर लेवल काफी हाई हो जाती है 250-300 से ऊपर, एंड यू आर डिहाइड्रेटिंग, आप बार बार यूरिन कर रहे हैं, आप बार बार पानी पी रहे हैं, लाइक आप यू फीलिंग थर्स्टी, then you check your ketone levels if they are high, and that is something where you have to act before you land up in ketoacidosis. Very important point shared by you, Dr. Ovis. कीटोसिस इज नॉट हार्मफुल, डीके इज हार्मफुल। मतलब कि जब आप स्टार्व कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी में कुछ कीटोन्स बनते ही बनते हैं बेसिक। जब भी आप, अगर आप फास्ट कर रहे हैं और अगर आप कीटोन्स चेक करेंगे तो चांसेस आर कि बॉडी में कीटोन्स आएंगे ही आएंगे, जिनको हम टेक्निकल टर्म में कुछ न्यूट्रिशनल कीटोन्स भी कहते हैं। बट जब कीटोन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएं और बॉडी में हाइड्रेशन भी ना हो, तो हम, और अगर आपको स्टमक एक होने लगता है, वॉमिटिंग आने लगती है, तो आप वो कीटोसिस से उसके कीटोन्स एसिड में बन जाते, एसिडोसिस हो जाता है, जिसको हम डीकेए बोलते हैं, विच इज डेंजरस, जिसके लिए हमें हॉस्पिटल में जाके ही ट्रीट कराना है। तो अगर इनफैक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी रिलेटेड टू दिस वन विच आई So वुड। that is the reason जो हमने एक रिकमेंडेशन जो है कि अगर आपका शुगर 300 से ऊपर जा रहा है, that is the time you should break the fast. Yeah. Because if you remain hyperglycemic, and that's where the ketosis starts taking place. जब आप उस टाइम पे खाएंगे, इंसुलिन देंगे, and insulin level will reverse that ketosis when you give insulin. So the only treatment for ketoacidosis is fluids and right, insulin and carbs also we recommend. So very important point. In fact next question यही था कि क्या हम कार्ब फास्ट ब्रेक करने की जगह सिर्फ करेक्शन ले सकते हैं। तो जिसके लिए डॉक्टर ओविस ने बता ही दिया कि अगर 300 से ऊपर है तो ब्रेक करिए, इंसुलिन लीजिए, पानी पीजिए, फ्लूइड्स की कमी हो रही है बॉडी में, और कुछ कार्ब्स लीजिए। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ Doctor, do you all, anybody has more question? Dr. Tahir has to leave. So if you have question, we'll make sure Dr. Ovis stays. If you don't have question, then we'll end the session. Okay, so I think now nobody has the question. Thank you so much, Dr. Ovis, Dr. Tahir, Asra, and Misbah for wonderful knowledge sharing. This was one of the best sessions I had. It was very interactive and very niche specific. ये प्रॉब्लम सबको आती है पर पता नहीं होता किससे पूछे।
एक और चीज मैं बोलना चाहती हूँ, if you are still doubtful, you want to keep a fast, please you can reach out to Dr. Ovis or Dr. Tahir or me. I can connect you to Asra or anybody else. I will share the number. Dr. Ovis, if you can share your contact number. Dr. Tahir, if you can share your contact number in chat box, it will be helpful. Sharing now. Yeah, please share it now. You can share it in chat box so that people can reach you. Yeah. Dr. Ovis has shared his number. Email address, okay, email address can also be shared. Okay, both have shared their email addresses also. I have shared mine also. You can reach out to any one of us. Stay connected, ask questions. Thank you so much. Have a wonderful Ramadan. Have a blessed holy Thank you, month. Jack. It is really nice because these kind of sessions are very informative. In fact, we as doctors learn so much from the people who are living with type 1 diabetes, and that is how it is. We are not like I have read guidelines, but when it comes to practical, I think these type of sessions should happen in future as well. So Definitely. प्रैक्टिकल बात करते हैं तो उससे ज़्यादा बेटर आता है. प्रैक्टिकल गाइडलाइंस तो जस्ट दे आर देयर टू गाइड अस, बट so we have to individualize it. हर कोई type 1 different है. Definitely. Very true. Guidelines never work. Okay, we have to individualize every person. Right. Thank And Thank you everyone. Thank you, so Dr. much. And there are few people जो हमारे founding forefathers हैं इस Empower Type 1 के, जिनका ये पूरा ड्रीम था कि Type 1s डॉक्टर्स एंड टाइप 1s एक ही प्लेटफॉर्म पे आके काम करें. डॉक्टर अमित, डॉक्टर मनीषा, डॉक्टर रितुल, उन लोगों के लिए भी थैंक यू. दो दे आर नॉट इन द मीटिंग बिकॉज दे आर ट्रैवलिंग, बट स्टिल आई वांट टू से थैंक यू फॉर दिस. Thank you so much. Thank you. Thanks, Mehak, for Thank you. organizing and moderating so beautifully. Thanks all the audience for all those beautiful questions. And obviously to teachers, I have learned a lot from you today. Thank you, Dr. Tahir. We are all learning from you. We're learning from each other. Thank you so much. Yeah. Okay. Bye. And don't forget to share the recordings. Last session अभी तक नहीं आया. सर ये वाला तो अभी अभी अपलोड कर दिया.